हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा हम पहले कर चुके हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट्स मेक देम स्ट्रॉन्ग? Kyan, as we know that along with the parenchyma, there are collenchyma and sclerenchyma, simple permanent tissues present in the plant. Collenchyma tissues provides flexibility to the plant and sclerenchyma tissues makes them hard and stiff. Collenchyma tissues, it can be observed in a cross section of a leaf stalks below the epidermis. आप देख सकते हैं इनको. Cells of these tissues are living and elongated. Mean यह है कि लिविंग होते हैं और इलांगेटेड होते हैं. सेल्स वॉल्स आर इरेगुलर, थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इट. पैक्टिन डिपॉजिट होता है दो सेल्स के बीच में. ड्यू टू दिस डिपोजिशन देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन देम. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. यानी अगर हम पत्तियों को ऐसे मोड़ते हैं, उनके डंठल को मोड़ते हैं तो वो वापस पोजीशन में आती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टूटता नहीं है पार्ट. स्क्लेरेनकाइमा, मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डेड होते हैं सेल्स. Cell walls of these tissues get thickened by the deposition of chemical compound named lignin, due to which there is no intercellular space between present in them. It makes the plant hard and stiff and provides strength to plants. This tissue is present in stem around vascular bundles, in veins of leaves and hard covering of fruits, seeds and nuts. Husk of coconut is also made up of these टिश्यू. अगर आपने देखना है कि टिश्यू कितना हार्ड होता तो आप नारियल की छिलके को देख लें. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फाइबर एंड स्क्लेरोइड्स. हियर यू कैन सी. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. नेम टू सिंपल परमानेंट टिश्यूज बिसाइड्स पेरेनकाइमा टिश्यूज. यानी पेरेनकाइमा टिश्यूज के अतिरिक्त और कौन से दो टिश्यूज हैं? Collenchyma and sclerenchyma are two simple permanent tissues beside parenchyma tissues. यानी कि तीन सिंपल टिश्यूज हैं, Collenchyma, sclerenchyma and parenchyma. आपको Collenchyma, sclerenchyma लिखना है. Where is sclerenchyma tissues present in the plants and what is its function? Sclerenchyma tissue is present in stems, around vascular bundles, in veins of leaves and hard covering of fruits, seeds and nuts. Sclerenchyma tissues makes the plant hard and stiff and provide strength to plants. Question number 3. Why does cell wall of the mature sclerenchyma tissues get thickened? Cell walls of these tissues get thickened by the deposition of a chemical compound named lignin, due to which there is no intercellular space present in them. Question number 4. Where is Collenchyma tissues located in plant and what is its function? Answer. Collenchyma tissues can be observed in cross section of leaf stalks below the epidermis. Flexibility in plant is due to the presence of Collenchyma tissues. Its main function of Collenchyma tissues is to give support and flexibility. Now, question number 5. Differentiate between Collenchyma and sclerenchyma tissues. Collenchyma tissues provide flexibility to plants. Cells of Collenchyma tissues are living and elongated. Sclerenchyma tissues make the plant hard and stiff and provide strength to the plant. Mature cells of these tissues are dead, long and narrow.